Hello friends, I am Manoj K, and in this series where we are trying to you can say discuss certain aspects related to OPSC, since the new syllabus has been introduced this year, everything is new for the students. So obviously the reference point is UPSC vis-a-vis some other state PCS as well. So in that context only, we are doing a series. In this series, yesterday, or you can say the previous session, we have done on ethics syllabus. And today we are going to discuss about the answer writing on ethics paper. So if you look at the previous session, in the previous session, I discussed briefly about the syllabus. And when I discussed about the syllabus, my whole intent was basically to help you to understand why and how to interpret any topic, or rather more precisely you can say any unit. It's very important to understand that why certain topic or certain unit is designed in a particular way. Why I am saying all these things? Because if you look at my previous discussion on the same OPSC series, I discussed about one aspect in the ethics syllabus, and that is moral reasoning. Moral reasoning. Fine. If you look at syllabus, whole syllabus of UPSC or any state PCS where the new scheme of things has been introduced, there is no mention of this. But I tell you, if you are not comfortable in this, you cannot write paper 4. It's very simple and straight. You cannot write paper 4. पेपर 4 के आंसर आप लिख ही नहीं सकते साहब बिना moral reasoning को समझे हुए. So it's very important to understand the moral reasoning. And this is why I helped you to understand the syllabus in that way. For example, if it is human values, why it is written like this? Value crisis, moral relativism. जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक वो आंसर राइटिंग में जा नहीं सकते साहब. Why? Because most of the time if you speak to the peer group, they move around only two things. That this paper is all about some keywords and examples. आप कुछ कीवर्ड देख लीजिए और एग्जाम्पल देख लीजिए और ये पेपर हो गया. It's very generous suggestion. It's very dangerous suggestion. Don't do it. Don't do it. Fine. So in that line only, we will continue the next session. And today's session is all about ethics. Answer writing. Fine, answer writing. Now, if you look at UPSC's previous question paper, again I am saying you, UPSC is your reference point. Though question may not be as difficult as UPSC or as of you can say higher standard as UPSC, but some of the question definitely will be. There is no second thought about it. Otherwise also, the ideal reference point in any case, it has to be UPSC. Because the syllabus is same now. Fine. So ethics answer writing. The ethics paper was introduced in 2013. So almost 10 years. Now in 10 years, if you look at the paper, fine, you will find that all the questions can be categorized broadly under 4 themes. पिछले अगर 10 सालों के क्वेश्चंस को आप देखो यूपीएससी के एथिक्स पेपर 1 के, तो आप ब्रॉडली 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हो, पूरी की पूरी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी गेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पैटर्न, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन, द नेचर ऑफ क्वेश्चन, so that you can take some help from the previous paper to understand the concepts very well, to improve your self-study very well. For example, the first category is the category of open-ended question, vis-a-vis you can say questions of
moral reasoning. Fine. If you look at the unit 1, that is ethics and human interface, unit 2, human values, moral thinkers, etc. Largely you will find the questions are framed, which is largely of the nature of open-ended, highly debatable, but you call it subjective. लेकिन अगर subjective question भी है तो आप उसको justify कैसे करते हो, किस basis पे करते हो, करोगे तो moral reasoning के basis पे ही. Fine. So this is number 1. I will give certain examples also. Let me first draw a framework or give a framework. Number 2. Number 2. Number 2 is simply keywords based question. In the sense, in the UPSC also, and the UPPCS or other state PCS also, where the things has been introduced, they pick certain keywords directly from the syllabus and they frame question. There is no, you can say, change, etc. They directly pick and very direct question. Direct question. In UPSC, these things were of high importance in when the things was introduced, 2013, 14, 15 mein, but not now. But not now. Fine. Now the third type of questions are solution seeking. Solution seeking. So when we say solution seeking, it simply means that UPSC is giving you certain problem. They seek solutions. They don't want to discuss anything in and around the concept. No, not at all. You just prescribe suitable solutions, practical solution, workable solution. That's it. Nothing else. It tries to test your observation, understanding, application of the concepts, etc. And fourth is applied. Applied ethics. Fourth. In the sense, whatever you read or the basic concepts, whatever you have read, it is being applied in the area of administration. Fine. Environment, international relation, war, surrogacy, abortion, etc. Fine. So broadly what I am trying to say, that these are the 4 categories of the questions. Why I am designing this? Because of the nature of design and demand. Again I am saying you, अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन को सिर्फ फ्लिप करके देख लो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 देख लो, और आप सिर्फ उसमें मार्क करते चलेगा, तो आपको लगेगा ब्रॉडली इस 4 तरह के क्वेश्चंस वो डिज़ाइन कर रहे हैं यूपीएससी के. फाइन. इससे आपकी सेल्फ स्टडी को एक डायरेक्शन मिल जाता है, उससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगी. फाइन. नाउ लेट्स सी ऑल दीज थिंग्स. Let's try to understand all these things through certain questions of the previous year paper only. I am taking questions from UPSC PYQ. उसी से broad ideas मिलेंगे आपको. So as I said, the first category of the questions are of open-ended, based on moral reasoning, highly subjective questions. So try to read this. With regard to morality of action, one view is that means are of paramount importance, and the other view is that end justify the means. Which view do you think is more appropriate? Justify your answer. Now, when we read, everyone read about means and relationship. Fine. आप अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो कांट, इमैनुअल कांट में दिख जाएगा. अगर गांधी पढ़ रहे हो तो गांधी में भी मीन्स एंड दिख जाएगा. फाइन. थ्योरी ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हो उसमें भी दिख जाएगा. बट द क्वेश्चन इज हियर सिंपली दिस आस्क जस्टिफाई योर आंसर. Justify your answer. So the question is here that it's not about the concept, it's all about the context, and it's all about the moral reasoning
through which you will write your answer. ये तो लिखोगे नहीं ना, what is means, what is end, इसका कोई सेंस तो है नहीं, पूछ ही नहीं रहा ऐसा. ये तो दोनों के रिलेशन पूछ रहे हैं. Why people used to give more importance to this or this? What is your opinion? Whatever your opinion, it is going to be accepted, or you can write only on the basis of the context and moral reasoning. That's why I said the first category of question is open-ended, highly subjective. Discussion, debates, etc. are very intense. It's not about right and wrong. Again, ये सही है, ये गलत है, आप बताइए, जस्टिफाई कीजिए. जस्टिफिकेशन का बेसिस रीजनिंग ही होगा साहब. Second question, how does ethics seeks to promote, what does ethics seek to promote in human life? Why is all important in public administration? Fine. एथिक्स क्या प्रमोट करना चाहती है सब, लेकिन इस आंसर को लिखने के लिए आपको कुछ कंटेक्स्ट पिक करना पड़ेगा. एथिक्स वाज टू प्रमोट फाइन well-being in society, overall health of the society. But then how? So you will pick certain examples, context, you will explain it, fine, and you will try to convince the examiner that whatever you are writing, what is the significance of it. Fine. So this is what the question is. Fine. Let's take another certain questions, more questions. Fine. You see, social values are more important than economic values. Discuss the above statement with example in the context of inclusive growth of a nation. Fine. Now, this question is typically of ethics. So, if it's inclusive growth of a nation, you cannot write it like you can say economy answer, because here it talks about certain societal values related to opportunity, justice, equality, etc. Fine. Let's take this question. Some people feel that value keep changing with the time and situation, while others strongly believe that there are certain universal and eternal human values. Give your perception with due justification. Due justification. Now again, if you look at this question, it's highly debatable. It's a highly debatable. You may call it subjective. क्योंकि मैं क्लास में भी जब बात करता हूँ तो स्टूडेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि सर ये तो सब्जेक्टिव है. आप लिख तो नहीं सकते ना, ये सब्जेक्टिव है. आप लिखेंगे तो आंसर ही, और जब आंसर लिखोगे तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको व्यू पॉइंट देने पड़ेंगे, आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल इट सेज सम वैल्यूज कीप चेंजिंग. फाइन, यस, values keep changing, but then does it mean all the traditional values are wrong and all the contemporary values are right? No, it's not like that. It never happens like that. Fine. अगर ऐसा होगा तो हम एडल्ट्री और बाकी चीज़ों को भी जस्टिफाई कर देंगे, नहीं है तो ठीक है, बहुत अच्छा है साहब. So again, here if you look at, give your perception in this regard with due justification. Again, this is a question of moral reasoning. Moral reasoning. So my point number one here, what I want to intend you, this, that whenever open-ended question comes to you, you try to identify more important, the key demand than the context. Fine. Plus examples, and overall your ability to justify your positions. I'm not talking about introduction and body conclusion. जब भी ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले की डिमांड ही होगा, क्योंकि उसका क्रक्स समझना होगा. जब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं.
ओपन एंडेड होता ही इसलिए है क्योंकि वो सब्जेक्ट, वो उसमें सब्जेक्टिविटी होगी, उन पे इन्फ्लुएंस निकालना होगा, ऐसा ही होता है। मैं एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड ओपन एंडेड। एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते नहीं हैं, और ओपीएससी में तो सिंस इट इज़ द फर्स्ट ईयर तो वो ऐसे भी नहीं पूछेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन एक आइडिया होना चाहिए सो में दैट कि आप प्रैक्टिस करके एक कंफर्टेबिलिटी पे रहो। अगर वो 2 या 3 क्वेश्चन भी थोड़े टफ पूछते हैं तो यू शुड बी इन ए पोजीशन टू आंसर इट सो में दैट यू कैन टेक एज ओवर द अदर्स। कभी ये मत सोचो कि भाई कि ये स्टेट पीसीएस है, ये यूपीएससी है, नो नॉट एट ऑल। अब तो स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस भी देखोगे, जैसे आपने पीटी में देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, बहुत मेजर क्वेश्चंस ऐसे थे जो एट पार यूपीएससी है, और ये अब हर स्टेट पीसीएस में इस तरह का दिखने लग गया है, हर स्टेट पीसीएस में दिखने लग गया। सो दिस इज वेयर, सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पे आता हूँ सेकंड कैटेगरी पे, जहां पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन में ये दिक्कत है, यू नीड टू पिन पॉइंट दिस इज व्हाट। फिर कंटेक्स्ट, जस्टिफिकेशन, एग्जांपल्स, इन एंड अराउंड दीज थिंग्स यू explain, you examine, you evaluate. Fine. So this is what is the key demand of the first category. Let's come to the second. Second, I said the category of questions are the questions which is based on keywords. So if you look at the syllabus very well carefully, then you will find that in every unit there are certain keywords. हर यूनिट में कुछ कुछ कीवर्ड्स डाले हुए हैं। अब उस कीवर्ड्स में अगर आप देखोगे तो उस कीवर्ड्स के कुछ सिग्निफिकेंस है, ऑब्वियसली होंगे। वो कीवर्ड्स क्या, कुछ आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, यही तो है ना कि जिसे आप कीवर्ड कहते हैं। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इस कैटेगरी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, दे आर मोर और लेस वेरी स्ट्रेट, वेरी स्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, why should impartiality and non-partisanship be considered as foundational value in public service, especially in the present day socio-political context? यह आपके सिलेबस में दिया हुआ, डायरेक्टली उठा के उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया 2 फाउंडेशनल वैल्यू पे। इसी तरह से अगर आप देखोगे, व्हाई हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, दो इट इज एप्लीकेशन बेस्ड बट द क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, it's basically based on EI. So they are not asking what is EI. No, they are asking you how will you apply. But then they have taken question directly from the key concept from the particular unit. Similarly, what do you understand by the term voice of conscience? How do you prepare yourself to hit the voice of the conscience? Now here, in these type of questions, if you look at all the questions of the previous year, I always say it's concept heavy. जिसे आप कीवर्ड कहते हो, वो कीवर्ड क्या है? वो कॉन्सेप्ट ही तो है। कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ आइडियाज होंगे इससे। सो whenever you write, if you are not very clear about the fundamentals and concepts, you cannot write. ये कहना बहुत आसान है, कीवर्ड्स डिफाइन कर दो एक सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में। यू हैव टू राइट 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डेप्थ। और डेप्थ देने के लिए यू सिंपली थिंक फ्रॉम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि ये आइडिया है और इसको हम ऐसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फाइन। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस वेयर दे सीक सॉल्यूशन फ्रॉम यू। Solution. The basic purpose of this is basically to understand whether you are able to understand certain contemporary problems or not. Number 2, where do you find the practical solutions, workable solutions? For example, young people with ethical conduct are not willing to come forward to join active politics. Suggest steps to motivate them to come forward. अब जैसे ये क्वेश्चन है यूथ
को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, सब सब मानते हैं, लेकिन कौन करेगा? तुम करोगे? नहीं करेगा। करोगे तो घर वाले वोट नहीं करेंगे, फाइन, और बोलेंगे 2024 तक रुक जाओ, उसके बाद डिसाइड करना, फाइन. बट एनीवे, सो इशू इज हियर दैट दिस क्वेश्चन इज टिपिकली ए क्वेश्चन ऑफ मीन्स ऑफ परसुएशन. लेकिन साहब लिखना नहीं है ना, थ्योरी पूछ ही नहीं रहा, कॉन्सेप्ट पूछ ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि साहब यूथ ज्वाइन नहीं कर रहा है, हाउ यू विल मोटिवेट. सो यू हैव टू गिव सजेशंस और स्टेप्स और सॉल्यूशन which is effective, which is workable. Similarly, you take the second question. Suppose the government of India is thinking of constructing a dam in a mountain valley bound by forest and inhabited by ethnic communities. What rational policy should it resort to in dealing with the unforeseen contingency? Fine. Again, solution. क्योंकि पूरी दुनिया में एक डिस्कशन हो रही है डेवलपमेंट वर्सेस डिस्ट्रक्शन. जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 3 क्वेश्चंस को आपको आंसर करने पड़ेंगे. व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फॉर होम, एंड थर्ड, डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड these 3 questions, probably you can answer this. Because it's not only about the development, it's also about development at what cost. Development for whom? So my point here is that only reading without digesting may not be of much help to you. If you go through the previous year's question paper, just go through it, flip it. हमेशा लिखने की कोशिश मत करो. एक बार पढ़ो, सोचो, बहुत ज़्यादा इंसाइट मिलेगा तुम्हें उससे, और उस पर काम करो, उस पर काम करना स्टार्ट करो. और इस तरह के सेशंस तो मैं लगातार कर रहा हूँ, सभी टीम मेंबर्स कर रहे हैं, काफ़ी हेल्प होगा आपको इससे. डोंट वरी फॉर दैट. फाइन. सो दिस इज व्हाट इट इज. नाउ इन सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट यू नीड टू डू एंड हाउ टू आंसर इट. फाइन. हियर यू डोंट हैव टू डिस्कस व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि वो दिया हुआ तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. इसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा की कोई ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू सिंपली, you can restate problem in briefly in introduction. Fine. For example, yeah, it's true that youths are not joining politics because of these reasons. Fine. And then you start the body part. Similarly, in the mountainous region, these days you can say development work are very fast, or you can say there are so many developmental projects are going on, and so there are so many reasons of the conflicts also. और उसके बाद अपना आंसर लिखो. So here this is what the introduction is, and then you have to come to the solution. यहाँ पे solution जब भी होगी तो उसे ideal मत देखो, उसे practical देखो. Practical does not mean unethical, try to understand. Practical simply means you are able to do it by understanding certain limitations, जिसे हम कंस्ट्रेंट कहते हैं. आप कंस्ट्रेंट को ध्यान में रख के कहते हो कि साहब ये तो बहुत बड़ा लिमिटेशन है, उसको ध्यान में रख के जब आप सजेशंस देते हो, दैट इज प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस. प्रैक्टिकल डज नॉट मीन अनएथिकल. जब हम आइडियल होने की कोशिश करते हैं तब हम इस कंस्ट्रेंट की, लिमिटेशन की बाउंड्री को तोड़ देते हैं, इसीलिए वो आइडियल कहलाता है कि आइडियल आंसर है या आइडियल पोजीशन है. आइडियल आंसर नहीं, आइडियल पोजीशन है. फाइन. लेकिन जब हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की हम जब बात करते हैं तो वो लिमिटेशंस आती हैं. हम जीवन में जब भी काम करते हैं तो लिमिटेशंस होती है ना, कंस्ट्रेंट है. जब हम उस लिमिटेशन के को कंसिडर करते हुए काम करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, वही प्रैक्टिकल है. तो उसको आपको ध्यान में रखना है. इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो फाइन. और अब जो लास्ट कैटेगरी क्वेश्चन है, दैट इज अप्लाइड. 2019 ऑनवर्ड्स आप देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में बढ़े हैं. फाइन. और अब जितने भी स्टेट पीसीएस है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आने लग गए. अप्लाइड इन नेचर, इन द सेंस, सी
The current internet expansion has instilled a different set of cultural values which are often in conflict with the traditional values. सब ह्यूमन वैल्यू का क्वेश्चन मान लो आप इसे, या अप्लाइड एथिक्स मान लो, कंटेम्प्रेरी एथिक्स मान लो, जो भी मानना मान लो, बट द क्वेश्चन इज बेसिकली इट इज ऑफ वेरी अप्लाइड नेचर. Yes, internet has a different set of values. Definitely yes. कैसे? You see the way we celebrate festivals, we exchange greetings, the way we are making communications, the way we have created a virtual world. There's so many things here. Fine. So here you don't have to talk much about the traditional values, etc. But you can talk everything only through examples. जैसे फेस्टिवल का ही ले लो एग्जाम्पल. अभी तो आप लोगों ने कितने सेलिब्रेट किए, दिखाओ एग्जाम्पल में. फाइन. सिमिलरली यू सी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स कंपनीज मोर प्रॉफिटेबल देन सस्टेनेबल एनालिसिस. अगेन, why CSR has been introduced? Fine. Because when we talk about the good governance is not the sole responsibility of the government. There are three major stakeholders: government, corporations or market, or civil society. In that context, we will have to see why we are talking about this. And then you have to link to this sustainable. Fine. But my point is here not to discuss about the content, basically to help you. This session is all about to help you to understand the different categories of the question based on the design, nature, etc. So with that, when you go through the text, etc., or the books, whatever you are going through, you must understand how to extract the key concept, and then you need to apply in the daily life. डेली लाइफ सिंपली मीन्स पॉलिटिक्स में उसको अप्लाई करके देखो, सोसाइटी में देखो, इंस्टीट्यूशंस में देखो, देन इट विल हेल्प यू टू राइट गुड आंसर. तुम्हारी कॉन्सेप्ट में वैल्यू एडिशन भी इसी तरह की थिंकिंग से ही होगी. सिर्फ आप बुक पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते. कितना पढ़ोगे, कितनी किताबें पढ़ लोगे? और ऐसे भी चाहे तुम एक पढ़ो चाहे 50 पढ़ो, डायरेक्ट बुक से तो क्वेश्चन पूछ नहीं रहे. फिर देन व्हाई यू वांट टू डू इट? And what is the utility of that kind of reading or that kind of hard work? Fine. So make it more utility oriented. This is what the whole session is all about. Fine. So a very quick recap. Fine. A very quick recap. Fine. There are, you can say, 4 broader categories of the questions. Open-ended, बेस्ड ऑन मॉरल रीजनिंग. ऐसा नहीं है कि बाकी में मॉरल रीजनिंग नहीं है, है ना साहब. लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ही डिस्कशन और डिबेटेबल क्वेश्चंस हैं, उसमें रीजनिंग का रोल बहुत प्ले करता है, क्योंकि किस बेसिस पे आप जस्टिफाई करते हैं. सेकंड इज कीवर्ड बेस्ड. कीवर्ड बेस्ड सिंपली मीन्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट्स दे हैव आस्क्ड. थर्ड इज सॉल्यूशन सीकिंग, एंड फोर्थ इज अप्लाइड. फाइन. So just think of it. Just quickly go through the previous questions of UPSC. उससे एक आइडिया मिल जाएगा तुम्हें. तुम लोग पहली बार लिख रहे हो मेंस. वी आर ऑलवेज देयर. लगातार पूरे के पूरे ये सेशन करने का पर्पस भी यही है, सो दैट इट कैन हेल्प यू. जहाँ तक हम लोग हेल्प कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज देयर. मेंटरशिप में कर ही रहा हूँ, 1-to-1 तुम लोगों के साथ मैं कर ही रहा हूँ, सो दैट वोंट बी एनी इशू फॉर दैट. फाइन. So this is all about this session. Thank you very much. Thank you.